and the rate of yours is very, very nominal. I don't think so. A normal independent house in Hennur, independent, no community, no gated community, no security, nothing, just a layout. In that, they are quoting 3.5 CR. 3.5 CR. Okay, this is with all amenities, gated community with luxury parks and so many things, and such kind of quality you're giving in. What is the price you're quoting? Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. This is Prithvi and you're watching Prithvi Nivasi. तो गाइज मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे. उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि उनके पास एक विला है सेल पे. फोटोज उन्होंने भेजी. तो गाइज सीरियसली फोटोज आर सो ब्यूटीफुल. इतने सुंदर फोटो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि इसका तो वीडियो लेना ही चाहिए. सुपर विला है. फोटोज में तो विला बहुत ही सुंदर और आलीशान, बहुत ही बड़ा विला लग रहा है. वेंकट सर को भी ये विला इतना अच्छा लगा कि ही हिमसेल्फ हैज ए क्लाइंट एंड ही वांट्स टू शो इट टू हिज क्लाइंट. तो वो मेरे साथ आ रहे हैं. वेंकट सर ने बोला मेरे साथ तू आ एंड हम दोनों चलते हैं कार में एंड देखते हैं विला को एंड मिलते हैं ओनर से भी. मैं अभी कह दे रहा हूँ, महंगा विला है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग देखो, चाहे आप खरीद पाओ इस विला को या नहीं. मैं चाहता हूँ ये सब लोग देखें. मैं चाहता हूँ आप अपने बच्चों को भी दिखाएं. सारे बच्चों को रियल एस्टेट देखना चाहिए, जानना चाहिए. दे शुड नो, ऑल द चिल्ड्रन शुड नो रियल एस्टेट. तो आपके बच्चों को भी मेरे सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ दिखाएं. दे शुड नो, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑल अबाउट. प्रॉपर्टी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रियल एस्टेट वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो गाइस देखते हैं, चलते हैं कंस्ट्रक्शन में. वेंकट सर को इसलिए भी ले जा रहा हूँ क्योंकि उनके पास कंस्ट्रक्शन का बहुत सारा नॉलेज है. तो चलते हैं अभी विला को देखने के लिए, ओनर से मिलते हैं. तो विल गो विद वेंकट सर एंड निकलते हैं. अभी हम जा रहे हैं वो विला देखने के लिए एंड आफ्टर द विला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया एक्चुअली वेंकट सर का. यहाँ पे वो सेम लेआउट है. टू कंस्ट्रक्शंस नो सर? साइट नंबर 16, साइट नंबर 13 एंड 16. साइट नंबर 16 एंड 30. तो गाइस वहाँ पे दिख रहा है आपको जेसीबी, 2 जेसीबी. मुझे तो नहीं दिख रहा अभी, यहाँ से तो नहीं दिख रहा. बट गाइज मैं दोनों कंस्ट्रक्शन का वीडियोस हम बनाएंगे एंड वी विल. वेंकट सर, आई हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड यू वेंकट सर बिकॉज ही इज बीन बिजी इन लास्ट वीडियो ऑल्सो. ही वाज बिजी विद द क्लाइंट्स. आपने देखा ही होगा. अगर नहीं देखा तो देन आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो ऑल्सो वेरी सून. सो दिस इज द सेम, यू कैन गो अराउंड. वो दिख रहा होगा आपको. ये लेआउट का मैंने बहुत बार वीडियो लिया है. इट इज ओनली 400 meters from Prestige Tranquility. You might have seen a lot of videos on this. So we are almost done. We are almost sold here. Hardly there are about 12 to 15 plots, and hopefully we'll be done with another 2 weeks maximum. You're getting a call, is it? No. No. Okay. तो guys मैं अभी वेंकट सर के बारे में बताता हूँ. He is handling all the investors and all the bankings. एंड ऑल्सो इफ इट इज द एंड यूजर जिसको प्लॉट खरीद के घर बनाना है, ही हैंडल्स एंड बेसिकली ही इज हैंडलिंग द कंप्लीट मार्केटिंग एंड सेल्स. एंड होपफुली वी विल बी हियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ प्लॉट्स कमिंग इन. मैंने तो बहुत कुछ बताया है इस प्रोजेक्ट के बारे में. आप भी कुछ बताइए. ఇప్పుడు మీరు చూసిన లేఅవుట్ ఉంది కదా, మీరు చూసిన లేఅవుట్ ఏముందో టోటల్ గా 59 సైట్లు ఉంటాయి. 59 సైట్స్ ఉంటాయి. 59 లో మా దగ్గర వచ్చేసి ఇప్పుడు హార్డ్లీ లెస్ దెన్ 10 సైట్స్ మాత్రమే అవైలబిలిటీ ఉంది. రిమైనింగ్ అన్ని సోల్డ్ అవుట్ అయ్యాయి. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ సైట్స్, టోటల్ లైక్ ద కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్? టోటల్ 59 సైట్స్. ఆ 59 సైట్స్ లో హార్డ్లీ 10 సైట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఇప్పుడు. ఆ 10 సైట్స్ లో కూడా ఈ వారం బుకింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఆల్రెడీ మా లేఅవుట్ లో 2 హౌసులు కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఈ రోజు నుంచే జేసీపీ వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. అది వర్క్ కూడా జరుగుతున్నది. ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేశాము. ఇది కాకుండా విత్ ఇన్ ఏ మంత్ ఆన్ ఆర్ బిఫోర్ August 15th లోపల. So guys, this is Buona Vista right here. Brigade Vista. Brigade Buona Vista. So this project is right opposite to the layout. So this is one of the layout. It's a 400 meters from Prestige Tranquility, and it's same 300 to 350 meters from Prestige Brigade Buona Vista, 150-200 meters from Brigade, and it's very much nearby Baldwin International School. Okay. And very much near to Kempegowda International Airport Road. Okay. It's hardly from our layout to the airport road. It's a 1 minute drive. And from our layout to the airport, it's hardly
20 kilometers, less than 20 kilometers. ओके It's a airport road. हार्डली अबाउट 10 या 15 प्लॉट है इस लेआउट में, एंड आउट ऑफ टोटल 59 प्लॉट्स ऑलमोस्ट इट्स ऑल सोल्ड इन ओनली 3 months. जस्ट 3 months में सब कुछ सोल्ड आउट. बैंग ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, बैंग ऑन इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड वेयर प्रेस्टीज है. जस्ट लुक एट दिस गाइस. Customer name. या तो गाइस लुक एट दिस, दिस इज ब्यूटीफुल. काफी बड़ा लेआउट है भाई, वेरी बिग, वेरी वेरी बिग लेआउट, ब्यूटीफुल लेआउट. एक कार आया था तो हर दिन में हर टाइम में स्टॉप करने के नहीं चाहिए. एंट्री कर लो. तो गाइज अभी मैं लेआउट आ गया हूँ ये विला कवर करने के लिए, बट मैंने आई नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना बड़ा लेआउट होगा भाई. जस्ट लुक एट दिस, देयर इज अ सिक्योरिटी राइट इन फ्रंट एंड वेरी वेरी बहुत ही बड़ा लेआउट है भाई. देखते हैं अंदर चल के कितना बड़ा ये लेआउट है और क्या क्या होगा. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. ब्यूटीफुल लेआउट. अभी मैं कार में हूँ, कार से ही इतना अच्छा लग रहा है. जस्ट लुक एट दिस, लवली मैन. काफी बड़ा है भाई. This is a villa, might be 4 BHK. दिस वन सर. This one. Yeah. This one or that one? या This one, huh? या दिस वन, दिस वन. तो गाइस काफी बड़ा लेआउट है. अभी ओनर से मिलेंगे. वेरी बिग लेआउट. हम आ गए हैं. रोड्स 30 फीट रोड्स लग रहे हैं मुझे ये, एंड ये पूरा लेआउट घूमने में काफ़ी टाइम लग जाएगा. तो गाइस मैं देखता हूँ अगर हम घूम पाएंगे तो ठीक है, एंड सामने विला को कवर करते हैं. सो लेट्स चेक द विला. ओनर भी है अंदर. ओनर ने खुद बनाया है. ही हिमसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड दिस. सामने दिस इज लुक्स लाइक 30 फीट, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया. आ जाओ सर. एक कार पार्किंग है, तो टाइल्स आर गुड. हाय सर, जस्ट टेकिंग द शॉट. आप मुझे समझा दो. एक्सप्लेन मी एवरीथिंग वॉट एवर यू हैव डन. तो दिस इज वेंकट सर. हिज कजन ऑल्सो लुकिंग फॉर द प्रॉपर्टी. आई शोड हिम द फोटो. सब कुछ दिखाया. एक्सप्लेन मी. This is all with dining edge. So this is door is looking. This is Godrej, is it? Digital locking completely with video only. अच्छा. And this is takeover. तो गाइस काफी बड़ा है यार. 48 mm. काफी बड़ा है. This is like very luxury door, and this has all this automation, is it? Yeah, display also. Display also we have that. Display. तो इसमें डिस्प्ले है लॉक में. गोदरेज का है, एंड नाइस बिग डोर. टीकवुड डोर. Yeah, takeover. टीकवुड डोर. ओके. सो दिस इज द हॉल. So this is the dining table. तो गाइस बेसिकली क्या होता है कि दिस इज ये डाइनिंग का प्रोविजन दिया है इन्होंने. काफ़ी बड़ा डाइनिंग आ जाएगा. 8-10 लोग आराम से यहाँ पे डाइन कर सकते हैं. एंड यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे वेंटिलेशन है. दिस इज लॉट ऑफ लाइट इन दी प्रॉपर्टी. व्हाट इज द फेसिंग? Site is west facing and door is north facing. So you get the door on northeast. Site is west facing, and this side north facing is the door. Yeah. And the door you have kept it in northeast corner. Okay. पड़ेगा. एंड ये डोर देखिए कितना सुंदर है. एंड दिस लुक्स लाइक 8 feet, say 7 feet doors. This is close to 7.5. This is 7.5. 7.5. Guys, generally you will not get this height. Generally it is 6 feet. This is 7.5 feet door. And 11 feet is the ceiling. From the ground to ceiling it is 11 feet. So 5 feet I had kept it as a setback, and where So guys, this is the utility. Just look at this space. 5 feet for utility. Okay. This is very nice, spacious. उन्होंने भी 8 feet रखा हुआ है, तो 8 and 5 like you have 13 feet.
13 feet spacious the setback from your wall यहाँ से, and पीछे भी काफी छोड़ा हुआ है इन्होंने. It is 28 acres you said ना? Yeah, 28 acres. Okay. So you're going to show. Can we go around and see entire I will show one round? Huh? That is the Chaitanya Villa. Chaitanya That is Chaitanya. I know that is about some 9.5 crores. One flat. Now it is 12 crores. How much? 12 crores. 12 crores. For each flat. One flat 12 crores. Yeah. 3 BHK 12 crores. तो guys 12 crores है उसमें. I don't think so. सपने में भी हम कभी ले पाएंगे. अगर आप लोग सपोर्ट करो तो definitely we will buy one flat of 12 crores. So this is the sump. So it is a total 14,000 liters. 14,000. And even top also we have 1,500 tank is there. Okay. So from layout water we will get it by default, So it is directly connected. Even the Kaveri connection also we have it. In future if we get water for Kaveri and straight away already connection point we had given it. Straight away we can utilize this water and everything for each house. They will keep separate water meter. So based on utilization, you need to pay for the water also. So this is basically a luxury project. Luxury. I can see the roads, the tiles. Everything 30, 40, 50, 30, 40, 60 and 80 feet roads we have and close to 5 parks we have. Inside 80 this. feet road also you have. Yeah, this is the next to that, no? Okay. That end with the That is 80 feet road. So now we are going to see first floor. we go. first floor. Next bedroom we go to the ground floor. We'll look at the guest bedroom. So even if you see whatever the brands we have used, the complete electric part is Legrand we have used. The top premium, one of the premium electrics that is the Legrand. This is Legrand. Yeah, Okay. switches and all, everything, cables and all, everything. Legrand brand we have gone. Even Okay. tiles also you can see. So this is the 4 by 6. And this is 4 feet and this is 6 feet. This is very big. Yeah, Kajaria tiles. Kajaria. Kajaria brand we have used. Branded. Yes. This is 6 feet windows, man. Almost my size. Look at for this room, this window is very big. So you have given big windows in all the malls. For ventilation purpose and future purpose and all. So that's why even without power also you can see my house ventilation and all. It will be always good with. Yeah, we don't need to on the lights. I can see that. Yeah, can you? Yeah. So this is an attached toilet. This is the attached one. Hmm. So for the guest room and even if you see the fittings and all everything, complete with Jaguar I had one. Complete. So guys, this is Jaguar over here. आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है. This is Jaguar. ये Jaguar है, सब Jaguar fittings है. And तो guys उसी के हिसाब से प्राइस भी है ये. सर ने फॉल सीलिंग बहुत अच्छा दिया. This This is is a branded one. Works 20 years warranty will get it. guys honestly बताइए, have you seen this type of 20 years warranty. Have you ever seen this type of fall ceiling anywhere? मैंने तो नहीं देखा, मैं आज देख रहा हूँ. This will be for 20 years. This fall The ceiling. company will get warranty. and all. Warranty. They will come on. Which company is this? Works. We have it in Indira Nagar, no? R&D center we have it. Works. Okay. Okay. Branded doors also we have it. This is all. Even in the bedroom, you have all this kind of Godrej luxury locks. And this is the living room. देखिए, the spacious living room. मैं size आपको बताऊंगा. The size of the plot I will tell you. This is mainly for the lift purpose I have kept it. So Oh. this is for the lift. Oh, this is the for the lift. Yeah, you can see the entire elevation. अच्छा, तो गाइज यहाँ पे लिफ्ट ला सकते हैं हम लोग. वो देखिए ऊपर तक. So this goes up till there completely. So the lift can come in here if there is for 2 people or 1. How many? Maximum nowadays 3 to 4 people they can keep it. So this granite looks very beautiful. ये भी high end है. Yeah, it's completely branded. And even this one also no branded only. This glass and all everything no. So this is completely Saint Gobain. He spent a lot of money, and here also I can see it's very spacious, and the light यहाँ से रोशनी सीधा it comes into the living room again, and very luxury villa. You see the windows also no. Completely Aparna branded I had used. Aparna brand. One of the topmost branded, premium branded. So complete entire no I had gone for with Aparna. Aparna. So Aparna is good, you mean to say? Yeah, Huh? it is the top no. Top. Yeah, and this is one more bedroom. The same doors. And guys, अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, and this is ये काफ़ी बड़ा है. This is quite spacious. तो guys इसलिए मैं कह रहा था, it is a costly villa. Look at this fall ceiling. And even tiles also 2x4 I had gone for. 2x4 on the walls. Guys, look at this combination of tiles on the walls. ये almost 5 feet, 5.5 feet. Generally इतना देखा है मैंने,
So this is one second bedroom with balcony. Okay, this is L shape, is it? completely. From the outer elevation I saw. It's beautiful looking, aesthetic look. Oh, it is L shape balcony. It's L shape over here. यहाँ दिख रहा है आपको. दूसरा हमने देख लिया. Then this is the family lounge. जैसे हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर से आते हैं, वी कम टू दिस फैमिली लॉन्च. काफ़ी स्पेशियस है, टीवी आ जाएगा, सोफा आ जाएगा, एक लिविंग रूम नीचे है, ऊपर भी एक लिविंग रूम जैसा है. एंड इट हैज़ अ बिग विंडो अगेन. विंडो ही विंडो है, काफ़ी सारा लाइट है यहाँ पे. This is one of the master bedroom. मास्टर बेडरूम. एंड दिस इज अ वुडन फ्लोरिंग. वुडन फ्लोरिंग. ओके. ये बाहर से मैं दिखाता हूँ आपको, आउटर एलिवेशन से. ये बालकनी एल शेप है इधर. ये आपको बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज अ सेपरेट वॉकिंग वार्डरोब. पूरा वार्डरोब आएगा एंड लेडीज कैन close this and change the clothes and all generally. So walking wardrobe is very spacious. Luxury. Glass partition will get it. So this fitting. तो यहाँ पे cubicle आएगा, glass cubicle. तो guys, brand new property. This is a completely brand new property. You can start your woodwork. So this is a L-shaped balcony. मैं आपको layout दिखाऊंगा ना बाहर से when I show you. So and you can see there's lights over here. Balcony के नीचे lights दिया हुआ है. So and this is the kind of so this is the kind of stones they have put on the wall. And वो देखिए, look at this elevation. That was the ground floor. We were below. वहाँ से लिफ्ट ऐसे आएगा and it will go up till there. So 2 लोगों के लिए या 3 लोगों के लिए sir has kept the provision. अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो आप लिफ्ट लगा सकते हो. So यहाँ पे we go to the terrace and there is one bedroom over here. So guys, this is the master bedroom, the biggest bedroom. The one more with complete woodwork, wooden flooring, and this is what is this called? Bay window. Bay window. तो guys, यहाँ पे ना हम लोग बैठ सकते हैं, गद्दा लगा के सो सकते हैं. We can look at outside. Look at the view. Beautiful. तो guys, अगर आपको लग रहा है कि ये ना किच-किच से दुनिया के किच-किच से बाहर आओ, अगर आपको अकेले में कुछ सोचना है, इफ यू वांट टू गेट सम आइडिया, जस्ट सिट हियर एंड ये देखिए पूरा लेआउट दिख रहा है आपको, कंप्लीट लेआउट. सो दिस इज व्हाई आई लाइक दिस विला. इनका फोटो देखते ही मैं भाग के आया. सो दूर से दिखाता हूँ आपको. ये दैट इज द बे विंडो कंप्लीट. Look at that. And इसमें भी attached toilet है. This is the balcony. This is for the balcony. So this is also balcony. Balcony इसमें ऊपर इस balcony में भी lights है. तो complete light. That is Buona Vista. इसमें भी wardrobe है. So guys, I'm going to cover the complete layout and with all amenities in part 2. So don't forget to comment part 2 and I will do it. तो गाइज दिस वाज द 4th बेडरूम. हम लोगों ने चारों बेडरूम देख लिए हैं. दिस ऑल्सो हैज वेंटिलेशन. यहाँ पे एक सिट आउट है. एंड अगर कोई पार्टी करना है, कुछ भी लोग हैं, वी कैन जस्ट यूज दिस कंप्लीट. हम लोग इसको ना काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर घर में काफ़ी सारे लोग हैं गृह प्रवेश में. तो गाइज मैं ऊपर जाता हूँ. ऊपर टैंक है. लेट मी गो अप एंड शो यू. देयर आर सम अपार्टमेंट्स, लैंडमार्क्स. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so And land, you are the landowner? I'm the landowner. And you are the owner of the whole building also. आप ही building के owner भी हो. But you only constructed the whole property. आप ही ने खरीदा ना ये? आप ही ने बनाया पूरा complete. There are lots of my clients asking for construction. Even in Mysore they are calling me. They are calling from different parts of India also. In Bangalore also they are calling me. I am looking at some selective people who can help my buyers and clients in good construction where they are not got cheated and things like that.
So looking at your quality and the rate of yours is very, very nominal. I don't think so. A normal independent house in Hennur, independent, no community, no gated community, no security, nothing, just a layout. In that, they are quoting 3.5 CR. Yeah. 3.5 CR. Okay, this is with all amenities, gated community with luxury parks and so many things, and such kind of quality you're giving in. Yeah. What is the price you're quoting? 3.2 we are quoting. So the price what you're quoting is 3.2. So I don't think so there is any comparison as such. So looking at your quality, I want to refer your construction to them. So can we do that? Will you be able to help them? So we can do it in Bangalore with you. Dedicated architects is there, dedicated civil engineers is there who can take entire project. And even if you see this, this project, it is completely with a civil engineer and architect only. So the designing and all, every 1 month they will come and my architect, he will visit it and how it is going and all. Okay. Even dedicated civil engineers there from morning to evening, they will monitor the project and all. They know Okay. the quality and how the output it is coming and all. Okay. So they will do all dedicatedly. तो guys, अगर आपको कोई plans चाहिए, कुछ भी चाहिए construction के हिसाब से, and if you want details of this property also, don't send me a WhatsApp. Please comment me. Once I get the comments only, I'll be able to send you on WhatsApp. So don't WhatsApp me, comment me, send me a comment, and whoever comments will get the details. इस property का भी, and also if you want to take construction, if you want to take the service of constructing your property, we can do that as well. So please comment me first, and then we will send you on WhatsApp. So guys, price. So sir, price. You are quoting 3.2 CR, 3 crores 20 lakhs. You said, is that negotiable? Slightly negotiable it is. Slightly we can work out on that also. And what is the land rate going on over here? 12,000 per SFT it is going on. So base price guys यहाँ पे अभी 12,000 चल रहा है per square feet. BMRD, so this entire layout is there, no? हाँ. 28 acres this we know. Okay. So guys, it is hardly 100 meters from your international airport, Budigere Cross. And even from It's hardly 100 meters, and you are right now in this kind of luxury layout right now, and the price is only 3.2 CR. So guys, मुझे नहीं लगता कि it is costly. I don't think so. I don't feel, because without any amenities, the properties are selling in a common layout for 3.2 CR. Right, sir? Yeah. And this is what is approvals you say? complete BMRD approval. So e-Khata and all, everything you have it and all. E-Khata is available. It is completely BMRD approved. ये BMRD approved means E-Khata. After BDA, now we have BMRD is there. Okay, so this is clearly BMRD approved with E-Khata and ready for registration. Yeah, ready for registration. तो गाइज हम लोग, तो गाइज ये डोर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा चौड़ा, वेरी बड़ा डोर है यार, ये पूरा टीक उट का बना हुआ है. अब हम जाते हैं बाहर. दिस इज द पार्किंग एरिया, कंप्लीट पार्किंग एरिया, एंड सर ने कंप्लीट टाइल्स दिया हुआ है पूरे वॉल में. वी कैन जस्ट वॉश दिस, जब भी मन करे हम इसको धो सकते हैं. एंड दिस इज द रैम्प, एंड नाइस टाइल्स यू पुट हियर, नाइस डिजाइन टाइल्स. And this is a small, beautiful garden. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled This is 30 feet. Okay, and ये है elevation यार. Look at this, beautiful, beautiful. यही guys, यही elevation makes the L-shaped balcony over here, and that is why it looks aesthetic. And that is the bay window over there. That is the bay window, and that is a balcony. And वो देखिए, he's given below the terrace and below the balcony, सब जगह इन्होंने lights दिए हैं, which makes it so very aesthetic. And just look at that. सर ने काफ़ी मेहनत किया है यार इसमें, काफ़ी मेहनत. And sir, what is the size of this? ये depth क्या? 50 feet. 50 feet. So this is 50 feet. Door in the northeast corner, and this is 30 feet. 30 by 50, BMRD approved, spacious. That is also L shape. वो भी एक L shape balcony है. नीचे एक bedroom है, ऊपर first floor में 2 bedroom, second floor में 1 bedroom. So totally 4 BHK villa. तो गाइस प्राइस तो आप मैंने वीडियो में बताया है. प्लीज़ कॉल करके मुझे मत पूछिएगा कि व्हाट इज़ द प्राइस. वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया है सब कुछ आपके लिए. प्लीज़ गो थ्रू इट, एंड दिस इज़ द विला. where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same?
और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट यू। तो गाइस मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर,